Abhinav, the first question to you. We all put pressure. The winning mantra, the essence of the winning mantra is pressure. We expect from our athletes. We expect Adil to give us champions. We expect you to win. How did you deal with pressure? Because all of us deal with pressure in different ways. How did you deal with pressure? Badly. Because I'm a human being and I don't like pressure. And I didn't deal with it well. But I learned to coexist with it. I learned to find a way to work myself in those situations. But did I enjoy it? Did I enjoy pressure? No, definitely not. That was not for me. I was in a sport which is kind of a lonely pursuit. Shooting is very individual, and at least in my era in the mid-90s, early 2000s, it is not the way it is developed as of today. I had a lonely sort of a career, but my constant companion in these 20-odd years in sport was self-doubt. So self-doubt and pressure, not a good combination. But I found ways to deal with it. I think one of the biggest things that really helped me deal with pressure was accepting it. I think that is very important. I think when we go to an Olympic Games or when we have pressure as human beings, and especially human beings like me who don't take pressure well, we resist it because it's uncomfortable. It's not something we like. But the moment I started accepting it and learning to coexist with it, it became a little bit easier. And I could at least start focusing on the process of what I had to actually do to execute my skills. So that was an important learning that I had in terms of dealing with it. Self-doubt was a very difficult part as well to try and deal with. I did a lot of work to get the self-belief that is needed. I did a lot of work to get the confidence that was needed. I hired psychologists, I worked with trainers, but frankly, in hindsight, it was a waste of money. But what really worked for me, or what changed for me, was when I stopped chasing self-belief and I started chasing self-respect. And that was a very defining moment in my career. And how did I chase the self-respect? Was giving it my all. The Olympics, as I said, didn't come once in 4 years. They came every day. It was a pursuit to be able to be the best that I could be better than what I was yesterday, and to really put my best foot forward every day. And every night before I went to sleep, I would look into the mirror and ask myself the question, have I given it my all? And on days when I did say yes, I always had a good night's sleep. And this process, repeated day in and day out, slowly started to build a degree of confidence, a degree of security. Because when I gained my self-respect, I was already a winner. I was a winner in my own eyes. And that was the most important thing on how to deal with pressure. When before I went to Beijing, I asked myself the question, have I put in my all for the last 4 years? And the answer was yes. And there I had my self-respect. And even before I shot the first Olympic competition shot in Beijing, I'd already won. I had won in my own eyes. And that was power. Fabulous. What a start. Gopi, if I could come to you on that note, in your case, moving on from being a champion yourself to producing champion athletes, time and again we build it up. Gopichand at the center of a badminton revolution. Gopichand has to give us medals, 2012, 2016, 2020. Similar kind of question, Paris. Now the sport has so much investment. How do you deal with this constant media glare, constant pressure, and obviously once the athlete grows, everybody has his or her ego, and all of these are successful athletes. How do you manage so many successful athletes as a coach? I think as Abhinav has said it, I think you learn to coexist with the differences. I think one of the bigger things, I think for me, maybe the last 15 years of coaching, right from 2004 when I started to maybe 2017, 18 were a different ball game. And the last few years have been very different. Today, there's a lot more media attention, there's a lot more social media, there's a lot more people involved in the sport, whether it's sponsors, managers, NGOs, federations, sometimes judiciary, politicians. There's too many people involved. So at the moment I get up in the morning,
I say I've done what I have to do over the years. I get up in the morning, do the best of what you can do, just stay happy, and then push in the things which you can push, and forget about the things which you cannot change. And I think that has been something which has been clearly the case. As far as shutting off is concerned, I've figured out a lot of ways of shutting off, so I don't let things which bother me surface up too many times. So I think that's one way of keeping the ecosystem a bit sane. Okay. That's how I look at it. मीरा, जब आप रियो के बाद टोक्यो गए तो all of us, and you were the only athlete in weightlifting, सबके उम्मीद आप पर थे. आपने सिल्वर मेडल जीत के हमारा खाता खोला इन टोक्यो. ऑल ऑफ अ सडन पूरा देश मीराबाई चानू चालू हो गया. उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोबारा आप जीते. उसके बाद आप उसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड भी आपने जीता. एक ही मेडल आपने अभी तक नहीं जीता है, वो इस साल है, वो है एशियन गेम्स. अगेन आपके साथ चाइना का कट्टर टक्कर होने वाला है, बिकॉज द चाइनीज आर गुड. हाउ डू यू लुक एट दैट? बिकॉज नाउ मीराबाई चानू इज ऑन सोशल मीडिया. हम लोग आप पे प्रेशर डालेंगे, आप क्या गोल्ड जीत के लाओगे. हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर? बहुत खुशी हुई कि बैक टू बैक मैंने मेडल लिया है इंडिया के लिए. तो इस बार भी हाँ, मेरे अभी तक जब भी मैंने गेम्स शुरू किया था तब से मेरा सपना थी एशियन गेम्स में मेडल लेना. तो 2018 में मैं मिस हो गई थी कि बैक इंजरी के कारण मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. पर इस बार होने वाले हैं एशियन गेम्स. मैं इसमें पूरा कोशिश करूंगी मेरी तरफ से कि हाँ, मेरा ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. मैं जो भी मेरे अंदर में जो आई है मैं पूरा निकालूंगी. बस जो भी मैंने आज तक मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ये पूरा भारतवर्ष ने मेरे लिए इतना प्रे किया है, प्यार दिया है. तो मुझे लगता है उनकी वजह से मैं मेडल जीती हूँ. तो मैं आगे की भी मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ. पूरा मेरे तरफ से कोशिश रहूँगी और मैं पूरा फोकस रहूँगी एशियन गेम्स में. मैं इंडिया के लिए एक मेडल लेने के लिए. और प्रेशर तो होते ही है, ये हर प्लेयर्स के ऊपर होते हैं प्रेशर में से हमको सीखने को मिलते हैं कि मैं आगे के लिए और भी अच्छा करूँगी. ओके विजय सर, when you train athletes like मीरा, आप जब कोचिंग पे आए वेट लिफ्टिंग टीम का, देखिए, एंड सॉरी टू आस्क यू अ क्रिटिकल क्वेश्चन एट द स्टार्ट, हम सब वेट लिफ्टिंग के साथ डोपिंग एसोसिएट करते थे कि वेट लिफ्टिंग का एक बदनाम हो चुका है डोपिंग के कारण. एथलीट्स बैन हो चुके हैं, भारतवर्ष एक के लिए नाम खराब हो चुका है. वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस आई आस्क्ड यू ईयर्स बैक, इफ यू रिमेंबर, कि आप डोपिंग के साथ कैसे डील करोगे, आप कैसे इस प्रॉब्लम को संभालोगे. आप आने के बाद एटलीस्ट नेशनल टीम में हमने एक भी केस नहीं देखा है. ज़रा इसके बारे में जिक्र करिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बोरिया जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है. जब से मैंने एज ए चीफ कोच ज्वाइन किया है, लकीली कोई भी पॉजिटिव केस वेट लिफ्टिंग में नहीं है. इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और नीचे थोड़े से अभी चल रहे हैं. और उसको ठीक करने के लिए हमारी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और नाडा ने हमारा बहुत सहयोग किया है कि हम जब भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है नेशनल कैंप में डोप टेस्ट कराने के लिए, नेशनल चैम्पियनशिप में डोप टेस्ट कराने के लिए, और इससे ज़्यादा ज़रूरी जो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी फेडरेशन और नाडा ने मिलकर किए हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है. जो प्लेयर्स को अवेयर किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ है कि गलत चीज़ खा के हम परफॉर्म कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो मेरा पर्सनल रोल नेशनल कैंप में रहा है, बच्चों को ये बिलीव कराना कि जो अनफेयर मीन्स हैं उसे यूज़ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. हम बिना अनफेयर मीन्स के अच्छे टारगेट्स वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं. और ईश्वर की दुआ से मैं उसमें काफ़ी कामयाब हुआ हूँ. जो आजकल अब जो मेरे पास प्लेयर्स हैं उनको ये विश्वास है कि हम कोई भी अनफेयर मीन्स ना यूज़ करके भी वर्ल्ड में मेडल ले सकते हैं.